Hello everyone, welcome to this lecture. I am Rahul Jain from the Mentalist Academy. We are doing questions from the H.C. Verma book. This is question number 17 from the exercises. The question says, a particle moves on a given straight line with a constant speed v. At a certain time, it is at a point P on its straight line path. O is a fixed point. Show that OP cross V, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट OP and V is independent of position P. So let us assume that suppose this is the particle and this is moving, the particle is moving in this direction with a velocity v, with a speed v. Suppose the particle is at this point P at certain time and at this point P dash at another time. We have to find the position vector OP where O is any fixed point. Suppose let's say this is some point O on this line. So if we join these two points, then this would be the OP vector, and at some other point this would be OP dash vector. At certain time this OP vector makes an angle theta with the direction of velocity, and at some other time this OP dash vector makes an angle of theta dash degrees with the velocity direction. Now we have to find the cross product of OP and V, velocity. This will be equal to OP, the magnitude of OP, into the magnitude of velocity into sine theta. Theta is the angle between OP and velocity, and the cross product of the two vectors would come out to be along a direction which will be perpendicular to this board. Both the velocity and OP are in the board plane, so the cross product would be perpendicular to this board. So suppose that cross product is in n cap direction, some n cap perpendicular direction. Now if we will club OP dash and sine theta together, let's say V into OP dash and sine theta. अगर हम इन दोनों को क्लब करते हैं तो देखो यहां से देखते हैं हम लोग OP dash और sine theta. OP dash, this is, if we will look at this triangle, so OP dash, OP is this value and the sine theta value of that would be this. Suppose this is some E point, so OE would be sine theta, OP dash sine theta, so this will come out to V, velocity into OE into n cap, in the n cap direction. Now अगर हम कोई दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं, लेट्स से OP डैश पॉइंट पर चले गए हम लोग, तो उस केस में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट OP डैश क्रॉस V would be equal to OP dash vector into V vector magnitude and sine of theta dash. अगेन डायरेक्शन वही रहेगी n कैप, क्योंकि अभी भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन में ही आएगा. सो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है अगर हम क्लब करते हैं? तो V कैप को मैंने V का मैग्नीट्यूड अलग लिख लिया और OP डैश साइन थीटा बचा. अब अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखता हूं तो OP डैश का साइन थीटा क्या है? अगेन OE है. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? इसको वापस से यहाँ पे मैं OE n कैप लिख सकता हूँ. तो मैंने पॉइंट चेंज कर देखा तो भी वैल्यू क्या आई? सेम है. सो दिस प्रूव्स दैट OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P. B की पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने पोजीशन चेंज करके भी सेम वैल्यू ऑब्टेन की. आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, राइट? इफ यस, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.